Hey dear subscriber, this is the revision of chapter 12 electricity, and this revision is based on all the concepts that we have learned, and it is with the help of mind map so that it is easy for you to remember. This is part 1 of the revision series of the lecture of the chapter 12. Uh, the next part I'm going to introduce you soon so that the entire chapter is revised. Let's get started with today's lecture. Okay, let's get started. So, we are going to study about electricity. Electricity is nothing but a form of energy, right? ऐसी energy जिसको हमें two parts में study करना है. So basically, हर energy का कोई fundamental property होता है, right? So the fundamental property that is associated with electricity is charge. So we have to study about charge to understand this concept of electricity. And when we study about charge, we'll be able to understand what is this electric current. Okay. So first, let us see in detail what is this charge. As I told you, it is the fundamental property. But because of that fundamental property, what happens is any body experiences electric force. Okay. So how do we define it then? Then it is the fundamental property of any body by virtue of which it experiences electric force. Yes, we have learned that it also experiences magnetic force, but that force is experienced only when these charges are in motion. So that we are going to study in detail in chapter 13, that is magnetic effect of electric current, that whenever charges are in motion, they experiences magnetic force as well. So basically how we'll define it as, it is a fundamental property of body by virtue of which it experiences electric force. So now let us study in detail about the charge. So the symbol that we use for charge is capital Q. The SI unit is coulomb, and C by charge, C by coulombs. Then it is a scalar quantity. Very important to remember that whenever we say scalar, that means we have nothing to do with direction. Okay. Yeah. Then we have learned many properties of charge, that it is always conserved. We can add the total charge, and one of the important one is the quantization of charge. What do we understand by term quantization? See, this is the formula to understand it better. Q is equals to NE. Q stands for charge, the total charge. N stands for the number, and E stands for the charge of an electron. So when I say quantization of charge, I mean that total charge on any body is integral multiple of the value of an electron, or the charge of an electron. So जितना भी charge present होगा, see on a body there would be some negative charge present, right? There would be some positive charge also, but here we're going to consider the electrons. So जितने भी electrons होंगे into the value or the charge of each electron will give me the total charge on the body. That is what is the quantization of charge. Okay. And this charge of an electron is found experimentally, and इसका value हम fixed होता है, that we have to learn, and this value you have to learn by heart, that it is 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम. सी वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है, सो दैट मीन्स इसका आंसर -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम होना चाहिए, and it is that only. The value of charge of an electron is in negative, so negative 1.6 into 10 raised to power -19 coulombs. But when we solve it, then we don't use the negative sign. So numerical में हम नहीं substitute करते, we just take the number part. Okay, that is 1.6 into 10 raised to power -19 coulombs. Okay, remember this. So जितने भी charge present होंगे, number of charges into charge of each electron is going to give me the total charge on an electron. And this number of the electrons present would always be in the integral multiple. When I say integral multiple, I'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6. It would never be in decimals. Okay. Now, this is the definition of 1 coulomb of charge, but we are going to learn this only after we study electric currents. It will become more easy for you to understand. Okay. Meanwhile, this is a value that should also be learned by you people by heart. See,
हमने देखा कि 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है. So 1 coulombs में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? So it is unitary method. To solve that we have to divide 1 by 1.6 into 10⁻⁻19. So 1 जब आप इसको solve करोगे, the number will roughly come out to be 6 into 10⁻18 electron. So 1 coulomb of charge में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 into 10⁻18 electron. And 1 electron में कितने coulombs होते हैं? 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Both of these values आपको याद होनी चाहिए. This is also a question in the textbook. They ask you in the exam. So in the board exam, questions are asked on the basis of this formula Q is equals to NE. So you should remember this formula nicely. Okay. Now we are moving ahead to electric current. अब current क्या होता है? So we have learned कि water current होता है, air current होता है, right? मतलब कब बोलते हैं हम water current? जब water flow करता है. Air current कब बोलते हैं? जब air flow करती है, right? That is wind. So current कहीं भी word जब use होता है, then we talk about the flow. But electric word अगर आ गया, मतलब we are fundamentally talking about charge. So electric current क्या होता है? It is the flow of charge, right? But to be very specific, अगर हम definition की बात करें, then this is the amount of charge flowing through a particular area in unit time. We always talk in sense of time. So electric current का definition क्या हो गया? Amount of charge flowing through a particular area in unit time. Or you can also define it as rate. Rate मतलब जब भी हम rate की बात करते हैं, that means we are talking about time. So rate of flow of electric charge through particular area. But this first definition is more specific. So it's better that you learn this definition. That the amount of charge which is flowing through a particular area in unit time is called as electric current. From the definition, we can make the formula and everything. So for formula, first let us know what is the symbol of electric current. The symbol that we use for electric current is capital I. And the SI unit is ampere, which is named after Henry Ampere, Marie Henry Ampere. So SI unit is ampere, capital A, symbol is capital I, symbol for charge is capital Q, SI unit is coulombs. Now again, since this is of the charge, time भी scalar होता है, so electric current is also a scalar quantity. Basis of the definition, the formula becomes rate matlab divided by time. Rate of what? Charge. So the formula is Q by T. Okay. Now we have learned the SI unit of current, that is ampere. So we have to define 1 of ampere. For that, what I have told you in the formula, you keep every quantity as 1 along with their SI unit. So current को 1 रखा, charge को 1 रखा, time को 1 रखा. Time का SI unit second होता है, charge का SI unit coulomb होता है, current का SI unit ampere होता है. So 1 ampere is equals to 1 coulomb by 1 second. So how we will define 1 ampere? 1 ampere is said to be the current when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. It is very simple. So one of अगर आप भूल जाओ, then you remember the formula and then you define it. Similarly, अब अगर 1 coulomb हमें define करना है, that will be in terms of 1 ampere in 1 second, right? So now we'll define 1 coulomb. 1 coulomb is that quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second. Right? So दोनों में vice versa use किया है. 1 ampere था, तो when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, and when 1 coulomb of charge define करना है, then when 1 ampere of current flows through a conductor in 1 second, then the charge is 1 coulombs. Right? So this is what is the definition of 1 coulomb and 1 ampere. Now moving ahead. So electric current के लिए we have to use a device to measure that how much electric current is there in the circuit. To measure the current, the amount of current. So now we have to see how we will measure electric current. For that I told you that we're going to use a device which is called as ammeter. Now this ammeter, see, from amperes, ammeter, everything is connected. So this is a device that we use to measure current in the circuit.
But that device, how do we connect it? So we always connect this in series with the resistor around which the current has to be measured. Okay, so emitter is always connected in series. Then we come to this very important fundamental. ये कहाँ पे यूज होता है मैम? सो ये यूज होता है जब सर्किट डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन आता है कि विच वन इज द करेक्ट सर्किट डायग्राम. तो एमीटर सीरीज में होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, राइट? देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो कैसे होता है. तो इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. Okay, and what is the direction? The direction is that it is always opposite to that of electron, right? So electron के opposite होगा, मतलब जिधर proton flow कर रहा है उसी के direction में current flow करता है. So अगर current positive terminal से negative की तरफ जा रहा है, that means electron कहाँ से कहाँ flow करेगा? From negative to positive, because current always flows in the direction opposite to electron. To remember this, I have told you PC, right? कि proton and current का direction same होगा. Okay, and that is from the positive terminal to negative. अभी positive और negative क्यों है? तो जब हम potential समझेंगे तब वो और clear हो जाएगा. Okay, so I hope this basic idea of charge current is clear. Now we are moving ahead to potential difference. अभी potential difference क्यों required है और क्या होता है? See, जब मैं बोलती हूँ difference and potential, so that means potential means the capability, right? वो ताकत. तो किस चीज की ताकत? जब हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बात करेंगे, क्या हो रहा है एक सर्किट के अंदर? चार्ज मूव हो रहा है. तो उस सर्किट की ताकत कि वो चार्ज को मूव कर सके, पर कहाँ से कहाँ? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तभी तो हम डिफरेंस बोलेंगे. Therefore we define it as the amount of work done to move a unit charge from one point to another. किसी भी चीज को मूव करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना. सो इधर भी काम होगा. दैट वर्क वुड बी डन बाय द सेल और द बैटरी. सो वो कितना काम कर रहा है चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. बट सिंस हियर वे डिफरेंस वी आर टॉकिंग, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पॉइंट. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिफाइंड एज पोटेंशियल difference. Okay, so formula क्या होगा? Since we're talking about potential difference, let the 2 points be A and B. So VA minus VB is equals to work done upon charge, W by Q. This is delta. Delta मतलब change. Change मतलब VA minus VB is equals to W by Q, right? But if out of this 2 points, if I take one point as infinity, infinity का मतलब होता है simply that उसके हर चार्ज के आसपास कुछ एरिया होता है जहां वो चार्ज अपना इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट कर सकता है. ठीक है, अभी उस इन्फ्लुएंशियल जोन के बाहर अगर कोई दूसरा चार्ज होगा, देन वी कॉल दैट पॉइंट टू बी इन्फिनिटी. क्लियर? सो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत दूर सन वाले डिस्टेंस पे हम कंसिडर करें. इन्फिनिटी मतलब इट इज रीजनेबल डिस्टेंस जो उसके जोन के आउट होगा, राइट? तो अगर ऐसा हो गया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि हमें कितना काम करना पड़ रहा है एक चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. So electric potential is defined as the amount of work done to move a charge from infinity to that point, and potential difference is the amount of work done to move a unit charge from one point to another. Okay, how about the formula in this case? So here the formula would be V is equals to W by Q. यहाँ पे VA minus VB is equals to W by Q था, because we are talking about 2 points. इधर एक पॉइंट infinity हो गया तो generally the potential at infinity is 0. So V is equals to W by Q हो जाएगा. It is taken by convention 0. Okay. Now a potential difference क्या है? So again it is a scalar quantity. Okay. Now if we'll talk about the unit of potential difference, so see, we represent by V. The unit is also V, that is volts. Okay, so the SI unit of potential difference is volt. That was a name after Alexandra Volta, right? Now जब भी हम SI unit की बात करेंगे, we'll define one of it. कभी भी one of it define करना तो we'll see the formula. See, 1 volt is equals to 1 joule by 1 coulomb. So when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge
from one point to another, then the potential difference between 2 points is said to be 1 volts. It's very simple, right? Now, अब measure कैसे करते हैं? So we measure it by voltmeter. करंट को measure करते थे एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को measure करते हैं वोल्टमीटर. एमीटर को कनेक्ट करते थे सीरीज में, वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में. वो भी किसके अक्रॉस? अक्रॉस द 2 पॉइंट्स between which the potential difference to measure. ठीक है, जिसके बीच 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दोनों पॉइंट से हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में वोल्टमीटर को. विल सी इट राइट नाउ कैसे कनेक्ट करते हैं. ओके, अभी पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप नहीं आता एक सर्किट में, उसे क्रिएट करना पड़ता है. हाउ डू वी क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस? सो वी क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बाय कनेक्टिंग सेल और बैटरी इन द सर्किट. तो क्या होता है, जैसे ही आप सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं एक सर्किट में, वी नो दैट सेल या बैटरी के अंदर देयर आर सम केमिकल्स, राइट? सो द मोमेंट वी कनेक्ट इन द सर्किट, केमिकल एक्शन स्टार्ट हो जाता है in the battery. When chemical action starts, so all the negative charges are drifted to one side and all the positive charges are drifted to one side, right? अब by convention, ये negative charges they start to move from one terminal of the battery towards the other side. तो कहाँ से कहाँ move होता है? Negative terminal देखो, बैटरी या सेल में हमने 2 मार्क करा है, आपने देखा है, one is the negative side and the other one is the positive side. राइट? नेगेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन एक साइड डिपॉजिट हो गया. पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा प्रोटॉन एक साइड. पॉजिटिव क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, तो द अदर साइड इज डेफिशिएंसी, एज हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. नाउ दिस नेगेटिव चार्ज स्टार्ट टू मूव, यहाँ से एक ये नेगेटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द एटम, राइट? मतलब यहाँ देखो, ये सेल और बैटरी विल कनेक्ट द एंटायर सर्किट हियर. सो यहाँ कंडक्टर होगा. सो जो कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव. सो सिंस इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता है, सारा इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट हो गया है, यहाँ पे नहीं है, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स अलग अलग पोटेंशियल पे है. एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो चार्ज मूव करता है, राइट? चार्ज मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे. जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके ऑपोजिट चार्ज मूव करता है. सो चार्ज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव. ठीक है, मतलब करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और ऐसे याद रखो कि आउट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव बड़े होते हैं, राइट? तो पॉजिटिव सिंस बड़ा होता है, जैसे हीट भी हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर तक मूव होती है, वैसे करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा. हाई पोटेंशियल किसका होता है? पॉजिटिव साइड का. इसलिए करंट मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, यही अभी हमने बात किया कि डायरेक्ट मूव फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी करंट फ्लो करता है, मतलब चार्ज फ्लो करते हैं एंड दी इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड सर्किट, राइट? नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ इज द पोटेंशियल डिफरेंस created? So it is created by the cell or a battery which undergoes the chemical action due to which the charges from high potential to low potential. Clear? Moving ahead to circuit now. अब सर्किट क्या होता है? So see, सर्किट continuous and closed path होता है. किसके लिए? ताकि करंट फ्लो हो सके. So the definition is, it is a closed and continuous path for the electric current to pass through. Okay? Now ये closed and continuous path को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. If it is open and if it is closed. मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज. ओपन कब बोलेंगे? जब उसका की ओपन होगा, मतलब स्विच जब उसका ऑफ होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता. बट क्लोज जैसी हो गया, मतलब स्विच ऑन हो गया और करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है. So current only flows when the switch is in the on position and the current flows continuous. जब वो ऑफ होगा तब करंट फ्लो नहीं करेगा. That is an open circuit. Okay.
Now we'll talk about certain circuit symbols which are very important to understand so that we understand electric circuit में हमने क्या क्या components use किए. See अभी हर बार एक circuit में switch बनाना, then एक bulb बनाना, पूरा battery बनाना is not very easy. So हमें symbols use करना पड़ता है so that it become very convenient for us to use. राइट. तो सेल कैसे यूज होता है? सो हम सेल को दो टर्मिनल से शो कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वन ग्रेटर अदर वन स्मॉलर एंड देन द कनेक्टिंग वायर्स अराउंड. बैटरी क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. सो सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलके बैटरी बन जाता है. बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज सेल पॉजिटिव नेगेटिव. तो जहां नेगेटिव होता है नेक्स्ट सेल का उधर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव तो नेक्स्ट का पॉजिटिव नेगेटिव. इट गोज इन दैट वे ओनली. राइट. क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए तभी चार्ज फ्लो होता है. अगर यहाँ भी नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा. राइट. तो बैटरी और सेल का क्या काम होता है? टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस. देन वी हैव स्विच. अभी स्विच दो स्टेट में होगा, ओपन क्लोज. तो ओपन इस तरह से होता है एंड क्लोज के लिए बीच में वी हैव अ डॉट. सो क्लोज है मतलब करंट विल फ्लो, ओपन है मतलब करंट विल नॉट फ्लो. स्विच का डेफिनेशन क्या होता है? दैट इट इज अ ऑन ऑफ डिवाइस which regulates the amount of current flowing in the circuit. Then wire join, sometimes we have to join two wires to one connection, so that is a wire join. But sometimes no joining is required, just crossing of the wire is required. So that we show it in this manner. Usually अभी आप लोगों को इतना use नहीं आता है this things. Electric bulb we represent in this manner. Okay, kind of a M we are creating here. Now resistor of resistance R. See resistor क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है. So उसका रेजिस्टेंस होता है. We'll study in the next slide कि रेजिस्टेंस क्या होता है. So रेजिस्टेंस को डिनोटेड बाय दिस exact pattern. फिर रेजिस्टेंस को आप जब चेंज करते हो तो उसको बोलते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस. उसको कैसे डिनोट करते हो? उसके ऊपर या तो एरो और इन दिस. So rheostat या variable resistance क्या करता है? It regulates the amount of current flowing in the circuit. It opposes the flow of the current. Emitter क्या करता है? So it is always measures the value of the current and is connected in series. And voltmeter always measure the potential difference and is always connected in parallel. Okay. So voltmeter को V से denote करते हैं, emitter को A से. We mark this positive and negative the two sides. पॉजिटिव वाला साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को ऑलवेज टू द नेगेटिव. सेम गोज विद वोल्टमीटर आल्सो. ठीक है. सो दिस इज द सर्किट सिंबल जिसकी मदद से वी आर गोइंग टू मेक अ सर्किट हियर. सो दिस इज द बेसिक सर्किट. व्हेनेवर यू मेक द सर्किट एटलीस्ट दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन द सर्किट, व्हिच इज सबसे पहले एक सेल या बैटरी, कैन ड्रॉ एनीथिंग. उस पे पॉजिटिव नेगेटिव मार्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव अ स्विच. दिस इज इन द क्लोज स्टेट. तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. फिर हमने एक रेजिस्टर बनाया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ में सीरीज में एमीटर को कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. सो सी दीज आर द 2 पॉइंट्स जिसके अक्रॉस वोल्टमीटर को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एमीटर को सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल में. बैटरी का पॉजिटिव इधर था तो सी एमीटर का भी पॉजिटिव इज दिस साइड एंड वोल्टमीटर का पॉजिटिव इज आल्सो दिस साइड एंड द अदर साइड आर ऑल नेगेटिव. So this is the basic circuit diagram which contain a cell, a switch, a resistor, emitter, voltmeter, and of course the connecting wire to join on and for the current to flow. Now we'll study about Ohm's law. So see, Ohm's law का statement is very important. This Ohm's law was given by George Simon Ohm. तो ये भी आपको याद रखना है कि who has given Ohm's law? George Simon Ohm. क्या statement दिया था उन्होंने? He said that the electric current flowing through a metallic wire. See, every word is important. Kindly don't deduct anything from the statement. और ये they ask you in the exam, so इसको तो by heart learn कर लेना. That the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to potential difference across its end. Okay, but ये statement यहाँ complete नहीं होता है. इसमें एक बहुत important condition होती है, which is that the temperature should remain constant. The entire statement क्या हुआ? That the electric current flowing through metallic wire is directly proportional to potential difference across its end, provided that the temperature remains
कांस्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करेंगे? सी आई टोल्ड यू दैट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे वी गेट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज R here. So what is this R? Constant of proportionality, which means resistance. अभी resistance के बारे में we are going to study. Okay, now this V is equals to IR. ये ओम्स लॉ का हम एक ग्राफ बना सकते हैं. That ग्राफ पे जो दो quantities we are going to take, that is potential difference and current, because Ohm's law talk about potential difference and current, right? जब हम एक ग्राफ बनाएंगे, we'll always see that this graph is a straight line passing through origin. See, ऐसा कुछ ग्राफ होता है. Can you see this straight line? And this is passing through origin, and the graph is between V and I. And you know, you simply take V on y-axis and I on x-axis. Why? I'll tell you the reason right now. Okay, so it is a straight line passing through the origin. But ma'am, यहाँ पे तो एक curve भी है. So there are two types of conductor. One is a ohmic conductor and one are non-ohmic conductors. So ohmic conductor वो होता है जो Ohm's law को obey करता है. Non-ohmic वो होता है जो Ohm's law को obey नहीं करता. तो the one which doesn't obey Ohm's law, उसके लिए ये straight line नहीं होता है, ये curve होता है. But the conductor which obeys Ohm's law, उसके लिए ये straight line होता है. Okay, so this graph for Ohm's law is a straight line that passes through origin. And और ये straight line हमें क्या show करता है? That V and I are directly proportional to each other. जितनी value I की increase हो रही है, उतनी value V की भी increase हो रही है. So the straight line suggests that V and I are directly proportional to each other. कंक्लूजन क्या हम ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं? दैट इफ V increases, मतलब if you keep on increasing the potential difference, that means बहुत सारे सेल आप कनेक्ट कर दोगे, तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हो करंट भी इंक्रीज होगा, बट उसका रेशियो V by I that will always come out to be a constant, right? So this the graph से हमें क्या क्या पता चल गया? That it is always a straight line passing through origin for ohmic conductors when plotted between V and I, which suggests that V and I are directly proportional to each other. That means if I increases, V also increases, but the ratio always remains constant. Okay. Now again, graph है तो graph का हम slope निकाल सकते हैं. The slope of the graph, that is y2 minus y1 upon x minus x will give me resistance. See, y upon x, that means V by I. Can you see it from here? V by I give me R. Therefore, I have told you कि V को हम लेंगे on y-axis and I को x-axis. But whenever you have a question that is related to graph in the exam, the first thing that you have to see is whether it's a VI graph or a IV graph. When I say IV graph, that means I is taken on y-axis and V on x-axis. अगर IV ग्राफ होगा तो 1 by R मिलेगा from the slope, but अगर VI ग्राफ होगा so we'll get R from the slope. This is very important and this is the tricky part also. So if you have graph related question in the exam, first you have to see whether it's a VI or a IV graph. If it's a VI graph, you'll get resistance. If it's a IV graph, you'll get 1 by resistance by calculating the slope of the graph. Okay. So this was about Ohm's law, but experimental verification is also important exam में. They ask you what is Ohm's law, how will you experimentally verify Ohm's law? तो Ohm's law को तो आप define कर दोगे. For experimental verification, we need to draw a circuit diagram, and this is the circuit diagram that we draw. See what we've done. हमने यहाँ पर ले लिया एक बैटरी की ले लिया है closed state में, so that means current will flow. Current flows from positive to negative. So this is the direction of current. Emitter series में connect कर दिया to the resistor, and across the two terminal of resistor I'm connecting potential difference, that is voltmeter. तो ये voltmeter parallel में होंगे. To the positive, emitter भी positive है, voltmeter भी positive है, negative side पे everything is negative. And then we are connecting this to a rheostat. Rheostat मतलब variable resistor. तो क्या करेंगे हम बार बार इसका वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है. रियोस्टैट का वैल्यू चेंज करेंगे, दैट मींस इट इज गोइंग टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट. सो करंट का वैल्यू चेंज होगा व्हिच वी कैन मेजर बाय एमीटर. ठीक है, हम देखेंगे कि जैसे ही करंट चेंज हुआ उतने ही प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज,
right? So this is how we are varying ki I is proportional to the potential difference applied across the circuit. Is it clear? Okay. Now we are moving ahead, and this thing you will have to write down entirely. This we've done during the class. So आप पूरा theory वहाँ से देख सकते हैं what to be written. This was the explanation कि कैसे हमने verify किया है, and this is the circuit diagram. For exam you push that draw the circuit diagram to experimentally verify on this. This is a very important part in the exam. ग्राफ बनाने को बोलेगा, ग्राफ से आप बोलेगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, सो यू मस्ट नो हाउ टू डू इट. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेजिस्टेंस. अभी देखो रेजिस्टेंस क्या होता है. सी रेजिस्ट करना मतलब क्या करना, किसी चीज को रोकना. रोकना मतलब इसको अपोज करना, राइट. एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी टू अपोज या टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. तो जब एक कंडक्टर अपोज करेगा चार्जेस की फ्लो को, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, और वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो रेजिस्टर होता है. ओके, so resistor is a device that offer resistance. Resistance is a property to oppose the flow of charge, right? Basically, we can define it as the property of conductor to resist the flow of charge through it, or it is the obstruction to the flow of electron through the conductor. मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला देखें इसका, सो फ्रॉम द ओम्स लॉ हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं. ओम्स लॉ इज V is equals to IR, so R is equals to V by I. That means, can you see here R and I are inversely proportional to each other. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा, राइट. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आल्सो. नाउ रेजिस्टेंस क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द रेजिस्टेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ इज द रेजिस्टेंस कॉज. सी, जैसे ही हमने सेल या बैटरी कनेक्ट किया, मतलब वी आर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव की तरफ, राइट. अभी जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो कंडक्टर में ऑलरेडी देयर आर एटम्स प्रेजेंट. अभी ये इलेक्ट्रॉन भी उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएंगे. जैसे ही एटम के साथ में ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे, व्हेनेवर देयर इज अ कोलिजन मतलब देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है व्हिच वी कॉल इट एज रेजिस्टेंस. इज इट क्लियर. सो हमने क्या बोला कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं. चार्जेस जैसे ही कंडक्टर में जाएंगे, कंडक्टर में एटम्स होगा, दोनों कोलाइड करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा व्हिच वी कॉल इट एज resistance, and this is the cause of the resistance. Okay, now if we talk about the SI unit, so what is the SI unit of resistance? It is ohm. क्यों? Because this term resistance was derived from Ohm's law, इसलिए इसका unit ohm होता है, which we denote in this way. Okay, अभी 1 ohm हमें define करना है. So from where do we define? From here. So जब 1 volt का potential difference होगा, 1 ampere का current होगा, तो resistance 1 ohm होगा. डिफाइन करते हैं. इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through a conductor when the potential difference of 1 volt is applied across its end, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm, right. See, if the current of 1 ampere flows through a conductor from here 1 ampere, when the potential difference of 1 volt is applied across its end, then the resistance is said to be 1 ohm. So 1 of anything defined करना is very easy. You just have to remember the formula and substitute 1 with the SI unit of that particular quantity, and just उसको word में put up कर दो. That would be your definition for 1 of any quantity that we have to define. Okay. Now there are certain factors जो resistance को affect करता है कि resistance किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा. So there must be certain factors for that, right. So the factors that we have studied is the length of the conductor, first thing, right. We can इसको हम कैसे recognize या remember कर सकते हैं. A road, ठीक है. So अगर एक road है which is very narrow, right, और बहुत लंबा रोड है, so that means the length is more, so traffic ज्यादा होगा, आपके व्हीकल को रेजिस्टेंस मिलेगा टू ट्रैवल. इन द सिमिलर मैनर अगर कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर.
अभी लेकिन अगर उसी रोड को अब मैं वाइड कर दूं इंस्टेड ऑफ नैरो, तो क्या होगा, you'll get more space to travel. सिमिलरली अगर मैंने कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिया, सो फिर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम हो जाएगा एटम के साथ में, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Now directly proportional to temperature. Why? Because जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी आ जाता है, एनर्जी आ जाएगा तो वो रैंडमली जल्दी जल्दी वाइब्रेट होंगे, जल्दी जल्दी ज्यादा कोलाइड करेंगे. सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. देन इट डिपेंड फ्रॉम द मटेरियल टू मटेरियल. हर मटेरियल का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, सो वो प्रॉपर्टी पे वेरी करता है रेजिस्टेंस. तो मैं इन सबको क्लब कर देती हूँ. सो वी सी दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Proportionality का साइन रिमूव करते हैं, we get a constant which is called as resistivity. Okay, we have resistivity. This is very important formula, my dear students. Questions in the exam are asked on the basis of this formula. So resistance is equals to rho L by A. Rho is resistivity, L is length, and A is area of cross section. Okay, and this is the resistance. This is the formula, learn it by heart. This is very important. Okay, now how would we define resistivity? So see, to define this resistivity, what we are going to do, length and area ko we are going to substitute 1 so this resistivity would be equal to resistance. So how will define resistivity? Resistivity is the resistance offered by the conductor of material of unit area of cross section and unit length. तो एक कंडक्टर उसका लेंथ यूनिट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट होगा, सो उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगी. सो आई रिपीट, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ. क्योंकि सी वी आर टेकिंग द स्पेसिफिक डायमेंशन, और स्पेसिफिक डायमेंशन पे ये रेजिस्टेंस होता है. Therefore, we also call this resistivity as specific resistance. Okay, talking to units, so it is ohm meter. Why? See, ये resistance है, इसका एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ जिसका यूनिट मीटर होगा. सो मीटर एंड स्क्वायर कैंसल्स आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ ओम एंड मीटर. सो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर. Okay? कभी भूल जाओ so you can derive it from the formula, because ये formula तो आप नहीं भूल सकते. We have learned it, we have used it so many times. अभी भी नहीं learn है तो do it please. How we define it as R is equals to rho L by A. Okay? अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि resistivity एक कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. When I say characteristics property एक कंडक्टर की सेम रहती है irrespective of the dimension. What do I mean by that? Let us consider कि मैंने कॉपर वायर लिया, का लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. ठीक है, एक और वायर लिया which is also कॉपर वायर और उसका लेंथ 2L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A by 2 है. तो दोनों में मटेरियल सेम है बट डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, राइट? So even though the dimensions are changing, but since the material is same, तो material same है तो वो behave the same manner में करेगा. But behave in what terms? In terms of resistivity. So resistivity एक material की constant रहती है irrespective of its dimension. But dimension change होता है तो क्या change होता है? Resistance change होता है. So एक ही मटेरियल के डायमेंशंस अलग होने पे उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है पर रेजिस्टेंस वेरी करता है. Am I clear on this? Okay, so this is very important क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जस्ट टू कंफ्यूज यू और आप फिर गलत आंसर दे देते हैं. So be sure that you don't put up wrong answer here when we talk about resistivity. So resistivity कब वैरी करेगी मैम फिर? तो अगर मैं कॉपर वायर लेती हूँ एंड सेकेंड वायर निकल वायर ले लिया या आयरन वायर ले लिया, तो दोनों का मटेरियल चेंज हो गया. द मोमेंट मटेरियल चेंजेस रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा. रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, रेजिस्टिविटी भी हो जाएगा, पर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा. आई होप नाउ ये रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट? एंड रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस भी क्लियर है. रेजिस्टर डिवाइस होता है और रेजिस्टेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है करंट को ऑपोज करे. ओके, so I hope abhi tak ka this was the part 1 of our lecture. I hope this is very much clear to you. I'm going to see you in the next part to complete and continue with the chapter.
Meanwhile, just go through it again so that it is thoroughly clear to you. It is very interesting kind of topic, and इसको sequence में याद करोगे, so it will be very easy for you कि start from चार्ज होगा तो करंट होगा, करंट से मतलब कुछ रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टिविटी होगा, ये डिवाइस सर्किट सिंबल्स है, सबका अपना अपना एसआई यूनिट है, उसका डेफिनेशन, दैट्स इट. Okay, so this is all about the part 1. I hope this is clear to you. Thank you.